Hey everybody, welcome back. So guys, this is 𝐲𝐡𝐞𝐞 for the Kiran Academy. आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे EBS स्नैपशॉट। सो गाइज, हमारा आज का ऑब्जेक्टिव एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है। हम लोग आज डिस्कस करने वाले EBS स्नैपशॉट है। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने EBS को डिस्कस किया था, जिसका मतलब है इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। सो गाइज, आप में से जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है, तो you can search on our channel for a playlist of AWS, and there you'll find this lecture elastic block store, as well as इस lecture के description में after this session we'll be putting up a link for elastic block store, the lecture that we have done earlier prior to this lecture. Okay, आज हम लोग EBS के snapshot के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा एक छोटा सा हिस्ट्री देख लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने EBS के बारे में क्या डिस्कस किया था। So in the previous lecture, we have talked about EBS. EBS is a virtual hard disk. EBS is a virtual hard disk. ठीक है? So guys, EBS is a virtual hard disk for your EC2 instances. तो जब आपके पास EC2 इंस्टेंस है और उस EC2 इंस्टेंस के अंदर आप डेटा स्टोर करना चाहते हो, या फिर जो भी आप सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है उस उस EC2 इंस्टेंस में, वो सब कुछ होता है EBS वॉल्यूम के ऊपर। So if that is your EC2 instance, so just imagine like this is your EC2 instance over here. Okay, so just imagine ये हमारा EC2 instance है. Okay, that is my EC2 instance. अभी इस EC2 instance में होता है अटैच हमारा EBS volume. That is my EBS volume. Okay, तो इस वॉल्यूम के ऊपर जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है या जो भी डेटा स्टोर्ड है, वो सब EBS वॉल्यूम में। Everything that you have done in your EC2 instance is stored on EBS volume. So EBS volume is a virtual hard disk for your EC2 instance. Now, how to create this volume? What is the concept of this volume? All those things we have done in EBS volumes, the previous lecture which I am talking about. Okay. आज हम लोग इस बात को लेकर कंसर्न्ड है कि अगर इस EBS वॉल्यूम के ऊपर जो आपने डेटा स्टोर किया है, अगर वो डेटा किसी भी रीजन से डिलीट हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है, वो रीजन कुछ भी हो सकता है। किसी ने गलती से एक्सीडेंटली एक फोल्डर डिलीट किया, इस फोल्डर में बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स थे और वो फाइल्स अभी आपके डिलीट हो गए, तो एक्सीडेंटल डिलीशन हो सकता है एक रीजन जिससे आपका डेटा लॉस हो गया। या हो सकता है कोई मालवेयर, जैसे कि एक रैंसमवेयर है जिसने आपके डेटा को एनक्रिप्ट कर दिया, अभी ये डेटा लॉस्ट हो गया आपका। तो ऐसे केसेस में किसी वायरस या रैंसमवेयर की वजह से डेटा लॉस हो जाता है, एक्सीडेंटल डिलीशन की वजह से डेटा लॉस हो जाता है। तो ऐसे केसेस में ऐसे डेटा लॉस को, ठीक है, आप फिर भी रिस्टोर कर सकते हो अगर आप इसका बैकअप बनाते हो। तो टाइमली बैकअप्स अगर आप बनाते हो तो यू कैन क्विकली एंड इजीली रिस्टोर योर डेटा। ओके, सो व्हेन वी टेक अ बैकअप ऑफ EBS वॉल्यूम, so that backup of EBS volume is called as snapshot. Okay, so in short, backup of EBS volume is known as EBS snapshot. So guys, point is very simple. जो आप बैकअप लेते हो अपने EBS वॉल्यूम का, ठीक है, उसी बैकअप को हम EBS स्नैपशॉट कहते हैं। ओके, अभी ये जो EBS का जो स्नैपशॉट होता है, ये बनाते कैसे और इसके अराउंड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, पहले मैं वो कवर करता हूँ, फिर मैं ये स्नैपशॉट बना के बताता हूँ। ओके, तो चलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो जस्ट इमेजिन हमारे पास यहाँ पे एक इंस्टेंस है। तो सोचिए ये आपका EC2 इंस्टेंस है। ओके, तो ये आपका EC2 इंस्टेंस है। इस इंस्टेंस में कुछ भी हो सकता है, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यहाँ पे विंडोज हो सकता है या फिर लिनक्स हो सकता है। ओके, तो ये विंडोज या लिनक्स जो भी है,
ये एक ईबीएस वॉल्यूम है, तो यहाँ पे आपका ईबीएस वॉल्यूम है, लेट्स इमेजिन दिस। और यहाँ पे कोई टाइप का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और आपका डेटा है। तो जब आप इसका स्नैपशॉट बनाते हो, तो स्नैपशॉट आप ही के रीजन में जहाँ पे EC2 इंस्टेंस है, वहां पे एक S3 बकेट में जाके स्नैपशॉट स्टोर होता है। तो यहाँ पे एक S3 बकेट है, ओके। तो दैट इज माय S3 bucket. So remember, if this thing is in Mumbai, so there is this Amazon managed S3 bucket. So this is AWS managed. तो ये जो S3 bucket है, ये Amazon managed है, AWS managed है, in the same region Mumbai. तो बेसिकली जब आप ये EBS वॉल्यूम का जब एक स्नैपशॉट बनाते हो, ये जो स्नैपशॉट है ये इस बकेट में जाके स्टोर होता है, एंड हियर कम्स योर स्नैपशॉट। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज सपोज योर स्नैपशॉट। ओके, ये आपका स्नैपशॉट बन गया। तो दिस इज हाउ यू क्रिएटेड अ स्नैपशॉट। और ये स्नैपशॉट आपके सेम रीजन में एक अमेजोन का खुद का बकेट है, उसमें जाके स्टोर हो जाता है। अभी जो आपने स्नैपशॉट बनाया ना, ओके, तो एक बात हम जानते हैं S3 बकेट के बारे में। बाय डिफॉल्ट जो भी ऑब्जेक्ट आप S3 बकेट में स्टोर करते हो, उसका जो स्टोरेज क्लास होता है वो स्टैंडर्ड होता है। इसका मतलब यहाँ पे S3 बकेट में जो आप स्नैपशॉट बनाओगे उसकी 3 कॉपी बनेंगी। एक कॉपी बनेगी अवेलेबिलिटी जोन ए में, दूसरी कॉपी बनेगी अवेलेबिलिटी जोन बी में, और तीसरी कॉपी सी में। सो गाइस, दिस इज एज सिंपल एज यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, तो अगर आप कंसर्न हो, जो आपके EC2 इंस्टेंस के अंदर जो आपका डेटा स्टोर्ड है, जो सॉफ्टवेयर आपकी इंस्टॉल्ड है, ठीक है, जो आपका सिस्टम स्टेट है, या फिर जो एप्लीकेशन रनिंग स्टेट है, अगर आप इस चीज को लेके कंसर्न हो कि कुछ लॉस हो सकता है किसी रैंसमवेयर के इन्फेक्शन की वजह से, मतलब आपका डेटा करप्ट हो सकता है, या फिर शायद आपका डेटा लॉस हो सकता है, ठीक है, तो अगर कोई भी रीजन की वजह से डेटा लॉस हो जाता है, डेटा करप्ट हो जाता है, यू लूज योर डेटा, तो इन दैट केस इफ यू हैड टेकन अ स्नैपशॉट अर्लियर यू कैन रिस्टोर योर डेटा। तो अगर आपने पहले कभी स्नैपशॉट लिया था, तो आप स्नैपशॉट मतलब आप अपने डेटा को रिस्टोर कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली स्नैपशॉट जब आप बनाने वाले हो ना EBS वॉल्यूम का, तो पहला तरीका आप मैन्युअली स्नैपशॉट बनाते हो। तो आप एक EBS वॉल्यूम को चूज करते हो और उसका स्नैपशॉट क्रिएट करते हो। ओके, तो जब आप स्नैपशॉट बनाने वाले हो आपके EBS वॉल्यूम का, ये स्नैपशॉट स्टोर होने वाला है S3 बकेट में। तो आपका स्नैपशॉट कहाँ पे क्रिएट होता है? S3 बकेट में। और S3 बकेट में जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है, ऑटोमेटिकली वो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होता है। ओके, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट 3 अवेलेबिलिटी जोन्स में कॉपी होता है। ओके, तो उसके 3 मिरर कॉपी, दो टोटल, और 2 मिरर कॉपीज बनते हैं। ओके, तो टोटल 3 कॉपीज बनते हैं किसी भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के। तो एक अवेलेबिलिटी जोन ए में है, तो दूसरा बी में है, तो तीसरा सी में है, तो 3 अवेलेबिलिटी जोन में 3 कॉपीज है आपके डेटा की। तो होपफुली ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है समझने के लिए। ओके, क्लियर? सो गाइज, अगर इसके कुछ पॉइंट्स हम लोग अगर लिखने बैठे, अगर इस चीज के बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे ना, तो इट इज समथिंग लाइक दिस। द फर्स्ट पॉइंट, EBS स्नैपशॉट, EBS, एक मिनट, ओके। सो पहला पॉइंट ये है, EBS स्नैपशॉट जो होता है, तो EBS स्नैपशॉट इज अ बैकअप, इज अ बैकअप ऑफ EBS वॉल्यूम। ठीक है, दूसरी चीज, EBS स्नैपशॉट is stored in S3 bucket, और ये जो S3 bucket है, this is managed by AWS।
Clear? And this S3 bucket also has to be in the same region as the EBS volume is. Same region as of EBS volume. Clear? Okay. तीसरा एक पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Entire EBS volume is included in EBS snapshot. So guys, आपका पूरा EBS वॉल्यूम जो होता है ना, वो इंक्लूड होता है EBS स्नैपशॉट में. यू डोंट हैव सिलेक्टिव ऑप्शन अवेलेबल, सिलेक्शन ऑप्शन अवेलेबल हियर. अगर आपके EBS वॉल्यूम के ऊपर इमेजिन करिए आपके पास बहुत सारे फोल्डर्स है, आप 3 ही फोल्डर का स्नैपशॉट बनाना चाहते हो, तो ऐसा नहीं होता. EBS का जब आप EBS वॉल्यूम का जब आप स्नैपशॉट बनाते हो, वो पूरे हार्ड डिस्क का बैकअप बना रहा है, पूरा हार्ड डिस्क. ठीक है, क्लियर? तो यू कैन इमेजिन दिस इज अ सिस्टम स्टेट बैकअप. ओके, क्लियर? तो ये पूरा सिस्टम स्टेट बैकअप है, इसमें हर एक चीज आएंगे, आपके जितने पार्टीशन से सब आएंगे. अगर आपका EBS वॉल्यूम है, जस्ट इमेजिन लाइक दिस वाज योर EBS वॉल्यूम. सो 2 मिनट के लिए सोचिए, ये आपका EBS वॉल्यूम था. दिस एंटायर ब्लू कलर थिंग इज EBS वॉल्यूम. EBS volume. Now what you have done, you have created 3 partitions on this volume. Okay, and you just want to back up data on this volume. आपको यहाँ का डेटा बैकअप करना है. तो it is not like you can back up this single partition. ठीक है, you will have to back up the entire thing. पूरा EBS वॉल्यूम का बैकअप बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा बैकअप. तो entire EBS volume is included in EBS snapshot. ठीक है, everything, जिसमें कितने भी पार्टीशन है, कितने भी फोल्डर्स है, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन EBS स्नैपशॉट. ठीक है, एंड फाइनली लास्ट पॉइंट. अच्छा, लास्ट तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन EBS स्नैपशॉट्स आर इंक्रीमेंटल बैकअप्स. ओके, सो बेसिकली EBS स्नैपशॉट आर इंक्रीमेंटल बैकअप. ओके, तो इसके बारे में मैं बात करता हूँ, लेकिन अगर लो लेवल पे मैं बोलने जाऊँ ना इंक्रीमेंटल बैकअप, तो सोचिए आज मैंने बैकअप किया EBS का डेटा. तो आज EBS के अंदर 525 GB डेटा था. तो इमेजिन लाइक आई हैव 525 GB डेटा इन EBS वॉल्यूम. ओके, सो देर विल बी अ बैकअप ऑफ 525 GB ऑफ डेटा. पूरा डेटा मेरा आज बैकअप में आ जाएगा. If I do a manual backup tomorrow, and from today till tomorrow we had added like something like 3 or 400 MB data. So let's imagine 525 MB, 525 GB plus the new 400 MB will be included in the backup that I make tomorrow. So today I have taken a backup of 525 GB. Tomorrow again I am going to take a backup of 525 GB and 3-4 MB data which is included in between. And day after tomorrow again, like we have some 500 MB of data. So day after tomorrow we have 526 GB data. Okay, so just imagine, yesterday we have taken a backup of 525 GB. So in between yesterday and today we have added approximately 400 MB of data. So 525.4 GB is to be taken today. तो बैकअप का साइज आज जो होगा इतना होगा. और फिर another backup that will be doing tomorrow. So let's imagine by tomorrow we are going to add something like 600 MB of data. 600 MB of data. So tomorrow the backup that we'll be taking will be, just imagine, 526 GB. So every day like you are taking more than 500 GB of backup. Okay, just in 3 days, yesterday, today and tomorrow. ठीक है,
So only for 3 days, if I calculate the capacity that I'll be consuming is something around like 1500 GB. So 1575, 76 GB ऐसा कुछ तो भी होगा. Okay. So I'm going to eat up like 1576 GB of data just in 3 days. Okay. Where 99% of my data was same, only there was fractions or maybe 1% of different data. So basically, when you do this backup, this is the manual backup. Every single day when you're doing a backup, this is manual backup. Okay, clear? So basically, what is the difference in between manual backup and incremental backup? So in incremental backup, the thing will work like, let's imagine yesterday we started an incremental backup. Okay, so yesterday we started an incremental backup. So yesterday we took a backup of 525 GB of data. Okay, from yesterday to today we have like new 400 MB of data created. So today we are just going to take 400 MB of backup, the new data. The changes will be documented. So incremental backup is intelligent. It can see how much data got changed. Okay, it will only document those changes. And from today until tomorrow, let's imagine we are expecting like 600 MB of more data to be added, deleted, or maybe modified. So whatever gets changed now, so that will be included in tomorrow's backup. Only 600 MB. So this is going to cut upon the size of your backup. You will not be required to like create a large capacity backup storage. ठीक है, तो यहाँ पे आपका छोटा सा backup solution काम कर लेगा. So in this case, like today, yesterday, today, and tomorrow, the sum total, you are just eating approximately like 526 GB or 527 GB of data. Okay, तो आप बहुत कम कंज्यूम कर रहे हो. मे बी लाइक 526 GB टोटल होगा. 525 GB plus 400 MB plus 600 MB gives you 526 GB. So basically, like every day, we don't change 90% of data or 99% of data. Every single day, when you use your computer, even in a production environment, you are just going to manipulate like fractions of percent of data, or maybe like very large amount of data if you have modified. So it will be 0.5% or 1%. Okay. But very usually, whatever changes will be there in your data will be in fractions. 99.9% of your data will be consistent. It will not change on daily basis. So guys, this is the benefit, like EBS volumes. Okay, the backup of EBS volume, the EBS snapshot, they are incremental backups. Okay, you can enable this feature of incremental backup. And lastly, okay, lastly, final point for this discussion will be EBS snapshots. EBS snapshots can be copied from one region to other. So you can create a copy of EBS snapshot from one region to another. Okay, so you can copy your snapshot from one region to another. So guys, these are some of the important points that I had to talk about EBS snapshot. Now exactly, I have created a lab. I'll show you how to create a EBS volume, attach to your instance, create a snapshot. Firstly, partition it, create some files in the volume, and then take a snapshot. So guys, our practical will be in this format. Okay. So we already have created. So already we have EC2 instances, EC2 instance. Here we are going to attach. Here we are going to attach a new EBS volume. On this volume, we are going to do partitioning. Okay, we are going to partition this and format it. And create some files.
So if you have sample data on this EBS volume, so finally, lastly, we will be able to create EBS snapshot. So guys, practical is very easy. हमारा practical ये है, हम लोग क्या करने वाले, EC2 instance पहले create करेंगे. Okay, so what I'm going to do is I'm going to create EC2 instance in the first place. Okay. Acha, I'm sorry, I have EC2 instance. I've already created EC2 instance. I'm going to create a new EBS volume, attach into the instance, partition and format this EBS volume, okay? And then create a few files on my EBS volumes. Once I have my data on EBS volume, I can create EBS snapshot, okay? So basically, like, we'll be talking about this. So first thing is I'll show you I have instance here. So guys, this is my Mumbai region. On my Mumbai region, I do have my um, EC2 instance. So ये server one जो है ना, this server one, okay, that is my EC2 instance. I'll copy the public IP of this server, take it to my RDP app. So I have remote desktop app on my computer. Paste my public IP, okay, connect. Username administrator. And password will open from you. So select your instance, click connect button over here, and RDP client ke niche, here you'll able to see get password button. Upload your private key file, which is over here. Okay, and here you can decrypt your password. So that is my password of my first instance, which I'll paste over here. And then okay. So guys, we are getting connected to my first instance. So this is a Windows server. As a result, like Windows है, इसलिए I have done RDP connection. तो ये मेरा पहला सर्वर है. ओके, ये विंडोज का सर्वर है. मुंबई रीजन में मैंने इसको बनाया और इसको मैंने आरडीपी के जरिए कनेक्ट किया. ओके, तो यार आई हैव कनेक्टिविटी टू दिस सर्वर. चलिए ठीक है. So once I got connected to this, the next thing, I'll just go to my disk management by right clicking the start button. I can go on to disk management. Under disk management, once we are here on to disk management, okay, the next thing is I don't see any hard disk over here other than disk 0. एक ही hard disk है मेरे पास, disk 0. अभी what I'm going to do, I'll minimize this virtual machine, cancel out of here, and I'll just look at server 1. Server 1 is created in Asia Pacific South 1A. So if you look into the availability zone where this server is, it is in Asia Pacific South 1A. What I can do is I can go to volumes, okay, select my create a new volume, click the button create volume, and just imagine I'm going to create a GP2 volume of 5 GB in size. Okay, I'm going to create a tiny volume of 5 GB in size. So this has to be created in availability zone 1A. We can give a name tag to this volume. So here we'll type name. तो ध्यान में रखिए जब आप नेम टैग दे रहे हो तो नेम एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, एक स्टैंडर्ड की है, तो नेम का इन कैपिटल होना चाहिए. ओके, और उसकी वैल्यू आप देना चाहो तो आप दे सकते हो. ठीक है, तो वॉल्यूम 1 मैंने दे दिया इसको. ओके, एंड देन क्रिएट द वॉल्यूम. Very quickly the volume gets created. So here we can see our volume successfully got created of 5 GB in size, and the state of the volume should be listed available. So volume state फिलहाल creating है, but it got created. If you do a refresh here, ये green हो जाएगा, available I'm sorry, blue in color आएगा और available आ जाएगा. ठीक है, अभी this volume, once you select it and go to actions button over here, okay, here you get an option to attach the volume. When we go to this option to attach the volume, under instances, we will be able to see server 1. And we have to choose a device name from the list. XVDB should be good for us. And we can attach this volume. So if we go back into our server,
Now we can see that the new volume that we attach to our server is listed here. First, you have to bring this volume online. Then the second step is you have to initialize it. In the previous lecture, I have talked about MBR and GPT. I'm going to choose GPT because GPT is a new file system partitioning method. Okay, तो disk partitioning के लिए ये new system है, GUID. GUID stands for Globally Unique Identifier Partition Table. In here, you can create 128 partitions, and this can span beyond 2 terabytes of size, so that you have new hard disk. तो अगर आपके पास 10 terabytes का, 12 terabytes का, 20 terabytes का hard disk है, तो भी GPT के साथ वो काम करता है. MBR 2 terabytes पे लॉक हो जाता है. MBR is an older tool. ठीक है. So MBR is a partitioning scheme that was developed in the old days of 1970s and 80s. Okay. So anyway, I'll stick to GPT and click OK. So once you have selected to partition this disk using GPT, you can then right click this black area. This is the unallocated color. Okay. तो ये black area यहाँ पे देखोगे ना, unallocated, मतलब ये वो area है जिसके ऊपर डेटा नहीं है. इसको partition format करके आप डेटा रख सकते हो यहाँ पे. तो I'll right click here and to create a new partition, select this first option, new simple volume, and then click next. So guys, my volume says I'm going to eat up entire 5 GB of capacity. Okay, next. So I'm going to assign a drive letter of, let's say, Z drive. या आप जो भी drive letter देना चाहते हो दे सकते हो. I'm going to use Z drive. Click next. The volume label on your like 5 GB partition that you are going to create will be like my data. Okay, and click next and finish. So guys, if I just take you to my Explorer, File Explorer, and then if I go to this PC, you can see that we have Z drive, and this partition label is my data, and here we can create some files. So guys, we'll be creating a new file, new text document, and I'm going to put over here, okay, file one, and I'm going to mention like this is created in Mumbai region. Okay, so I'm just mentioning that this is created in Mumbai region, and I'll save this, Control S. Okay, so guys, we've just mentioned in which region is this thing created. ये file कहाँ पे created है? तो हमारा instance Mumbai region में था. Okay, so we'll close this and close this. So we have some sample data to play with in this server one. Okay, on server one has 2 volumes. If I just check my storage option under my server one, you'll be able to see it has 2 volumes. One is of 30 GB in capacity, and the other one is the one which we just connected to it of 5 GB in capacity. This 5 GB volume has a new partition of 5 GB, and on which we have that file one. Okay, here we have that file one over here. So if I take you to Z partition, there is file one. Okay, in this file we have given a message, this is created in Mumbai region. So guys, we have some data over here. Let's assume this file is critical. Okay guys, देखिए डेटा आपके पास 2 टाइप का होता है. एक वो डेटा होता है, ठीक है, जो डिलीट भी हो जाए ना, कोई गम नहीं आपको. ठीक है, तो डिलीट हो जाए डेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन कुछ ऐसा डेटा होता है आपके पास जो डिलीट हो जाए तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है उससे. You can like you have that data to be called as critical data. So critical data is something that is not easily recreatable, or is extremely impossible, yeah, extremely difficult, yeah, impossible to recreate it. So remember, one more time I'm repeating, what is critical data? Critical data is a group of files. It can be a single file or it can be many different files, okay, on one disk or multiple disks. So critical data is something that is impossible to recreate or extremely difficult to recreate, extremely expensive to recreate. Okay, so any such type of data is critical data. Critical data is something that we need to back up, because as our definition of critical data is कि it is extremely expensive. मैं वापस अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ वो डेटा बना पाना. Okay, just imagine for a minute, एक critical data का example लेते हैं.
I am a software development company. Just imagine I am a software development company. I have an order to make a software for one of my clients, and I am almost near completion. At the ending of my project, almost like in a week, we'll be delivering the project to our customer, and we have taken 3-4 months to write the code for that software, and almost nearing completion. It is just around a matter of week that हमारा वो जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर देंगे हम लोग और हमारे कस्टमर को डिलीवर करने वाले। तो इसी वक्त पे क्या हुआ, हमारे फाइल सर्वर के ऊपर एक रैंसमवेयर अटैक हुआ और पूरा डेटा हमारा एनक्रिप्ट हो गया। So guys, I have paid salaries to at least like 30-40 software developers to make the software. I've invested 4 months in writing the software of so many people. And now finally what happened? Like we were just a week away from the delivery, and a ransomware has attacked our system and all our hard disk data is corrupt. We don't have anything in our hands. Okay? This data cannot be decrypted back. All the entire data is encrypted. All the data is lost. Okay? We don't have the key to decrypt the data. So basically, to restore that data, it is extremely impossible. It is impossible to recreate the data. या फिर अगर impossible नहीं है recreate करना, critical data कैसा होता है, वो impossible होता है recreate कर पाना। लेकिन अगर वो impossible नहीं है recreate कर पाना, तो वो बहुत expensive है, आपके पास वक्त नहीं है उसको बनाने का डेटा का। आपको 1 हफ्ते के बाद डिलीवरी है और आप बना नहीं सकते हो, तो ऐसा डेटा आपके लिए क्रिटिकल है। ऐसे डेटा के बैकअप्स बनाने, और बैकअप हमेशा ऑफलाइन होता है। ओके, क्लियर? तो गाइज ये सर्वर 1 के पास हमारी जो फाइल 1 है ये क्रिटिकल है। हम अज्यूम कर रहे हैं ये जो फाइल 1 है हमारे पास यहाँ पे ऑन दिस सर्वर, this file 1 on my Z partition is critical. We need to protect this file at any circumstance. So the best option is to create a snapshot. So we know one thing, this file is created on a volume of 5 GB in size. That is the volume. Okay? I can do one thing is I can go to actions option over here and I can create a snapshot. Okay? So here we can create a snapshot. By the way, you will be seeing an option like snapshot lifecycle policy. This topic we'll be doing in a dedicated session. I'm not going to mix snapshot lifecycle policy with manually created snapshots. So manual snapshots को हम आज consider कर रहे हैं. Okay. So I'm just going to create a snapshot over here. So choose your volume for which you want to create a snapshot, and then you can create a snapshot. Okay. All the snapshots that you create will be listed over here. Just under the volumes option, you have the snapshot option available. And here you can see all your snapshots. So in Mumbai region, we don't have any snapshots. There are no snapshots in Mumbai. So we'll go to volume, choose a 5 GB volume in here. Okay, Mumbai में हम volumes पे जाएंगे, 5 GB का volume choose करेंगे. Actions में जाके we'll create a snapshot. इस snapshot को description देना है. Okay, my critical data. My critical data. Okay, that is my description. So keep your description something that is easily understandable. Okay, so now we can create the snapshot. Okay, so if I just go on to the left hand side under snapshots, okay, so here the snapshot is being created. Here you can see the description, my critical data, and now it is in pending state. So it may take something around like 2-3 minutes, 4-5 minutes for the snapshot to get completed. Until then, मैं इसको नाम देता हूँ snap1 dash Mumbai. Okay, so we are calling this snap1 dash Mumbai. If I do a refresh here, अगर मैं refresh करूँ यहाँ पे, here we have a refresh button over here. So if we wait some time, and in 4-5 minutes, the snapshot should get completed. Amazon generally takes 4-5 minutes. In your case, if it is taking more than 4-5 minutes, 10-12 minutes also it can take. It totally depends on the load on AWS infrastructure. Okay. Other people are also creating snapshots. Other customers of AWS, they are also using the AWS infrastructure. So their servers are busy. Okay. So once the server is available and we are up the queue, so a server can process our request. Okay. Now, if I do a refresh, the snapshot got completed. So if there was a free server and we were in the queue, and the free server takes our request and creates the snapshot for us. So guys, our snapshot got created. अभी आप बोलोगे सर ये कौन से S3 bucket में बना? तो ये S3 bucket में Amazon की S3 bucket में बना है. You will not be able to see that bucket. तो अगर आप अपने S3 में भी चले जाओ ना, you will not be able to see the bucket in which this snapshot is created. Okay, so the bucket is completely managed by AWS. And remember,
You will not be able to see snapshot of other customers, and other customers won't be able to see the snapshots that you have created. We don't even know, हमें तो ये भी नहीं पता होता है कि ये जो स्नैपशॉट है एक ही बकेट में सबके स्टोर होंगे क्या. Amazon doesn't makes it clear in any of their documents. Okay, is there one humongous bucket they have and they have stored the snapshot of every single customer in one bucket, or they are creating dedicated buckets for every single customer. So we don't know even that thing. Okay, but only one thing we know, कि there is an S3 bucket that is managed by AWS in which our snapshots are created. And snapshots are safely stored because your snapshot will not be seen by anybody else, and they will not be able to see your snapshot. Once you log into the console, you will then see your snapshot. Okay, okay. You will not be able to see any other customer's snapshot. You will only be able to see your snapshot. So basically, this is our snapshot. Okay. One thing we can do is snapshot can easily be copied from one region to another. The last point we had discussed here is that EBS snapshot can be copied from one region to another. Okay. So what we'll be doing is we'll copy the snapshot from here, that is Mumbai region, to a destination region that is North California, where again I have a server. So what I'm going to do is I'm going to quickly go to snapshot button over here in California. And here we can see like we don't have any snapshot in California region. So I'm going to go into my Mumbai region, select the snapshot that I have in Mumbai, right click here and create a copy of the snapshot to another region. Okay. So when you click this button, create copy, here you see a description. I'm good with default description. Destination region where I want to copy this snapshot is US West 1, that is California. So if I just show you over here under regions, so see California region is US West 1. Okay. So I'm copying my snapshot to US West 1, that is California region. If you want, you can give a tag to your snapshot, else without a tag even you can copy your snapshot. Okay. So I'm going to copy the snapshot, and our snapshot that is in Mumbai will be copied to California region. Okay. Here, if I do a refresh, it will show that the snapshot is being copied. The snapshot is in pending state. So here I can give a name to the snapshot, copied from Mumbai. Okay. So I've just given a name that makes very sense. The snapshot is copied from Mumbai. Okay. And the status of snapshot is in pending state. You can hit a Control F5 button and check if like the snapshot got completed. So the copy process got completed. In my case, it barely took me any time. From Mumbai to California, the snapshot copying process worked very smoothly and very quickly, like it got copied. In your case, if it is taking 8 minutes or 10 minutes, still be patient. In another 2-3 minutes, it will complete the task. Maybe like every single time, Amazon will not work this smoothly as it is working for today. So anyway, we've copied the snapshot from Mumbai to California. एक बार आपने ये स्नैपशॉट मुंबई से कैलिफोर्निया कॉपी कर लिया, अगला स्टेप ये है कि आप इंस्टेंस में जाओ और चेक करो आपका इंस्टेंस कहाँ पर है. जो सर्वर 2 है आपका, सर्वर 2 इज इन यूएस वेस्ट 1C. Select your server and copy the public IP. Go to remote desktop connection app, paste your public IP over here. Okay, hit enter. Username automatically is administrator. And password, we have to obtain a password by clicking connect button, RDP client, and here we'll be clicking get password. So you have to upload your private key file, okay, and decrypt password. So that is my password. I can copy this password over here and take it to the other machine, paste it over here, and then okay. Okay, accept the certificate. Your connection should be created.
चलिए ठीक है. So guys, we are connected to a machine in California region. Okay. On the start button, if I do a right click over here, ठीक है, and if I go to my disk management option over here, so here you'll be able to see we have disk 0, we don't have disk 1. Okay, so we are able to see like we do have disk 0, disk 1 हमारा absent है, यहाँ पे disk 1 नहीं है हमारे पास. What I'm going to do is I'm going to minimize this. Okay, once I minimize this, I'm going to go to the button over here of of my Chrome browser. I'll cancel out of here, and in here, if I go to instance, I can see this is in US West 1C. From my snapshot, that I had created, that I've copied from Mumbai, I can create a volume. To create volume from the selected snapshot. So we are creating an EBS volume. While creating this volume, you can change the type of volume. Earlier it was GP2, now you can have GP3. So you can change this type of volume. As well, you can change the availability zone. I'm going to choose 1C, US West 1C. I'm going to add a tag over here, and the name of this volume that I'm creating is vol2. Okay, so I have a name configured volume 2, okay, to this uh, EBS volume. We can create the volume. So guys, our volume got created successfully. We can just go back to the volumes option over here, and we can find a volume of 5 GB in size. Now, this volume is created exactly in the same availability zone as our second server is. We can right click this volume and attach the volume to our server 2 that is in the same AZ. So here we found server 2. And the device name, we can choose anything from the list. Okay, you can choose anything and click attach volume. Once you attach this, if you go to your remote connection over here, you should be able to see volume disk 1 with 4.98 GB of capacity got connected. You can right click disk 1, and the only thing you have to do is bring it online. In the previous server, it was partition format and there was a file created. You just have to bring it online. Wait some time, a drive letter will be attached to this automatically. After waiting for a couple of minutes, if you still don't see a drive letter attached here, you can right click here and change drive letter and path. This is the option that you can choose. But without even clicking on this option, I got a D partition. Okay, so D drive is attached to my data partition. So if I go into my file explorer one more time, so here's my file explorer. Under this PC, you should be able to see D partition. Okay, and in D partition, you have the file 1. In this file, you have the same message. This is created in Mumbai region. So guys, this was extremely simple. If you have seen the entire practical, the flow of practical was such that we already had an instance, EC2 instance in Mumbai region. तो हमारे पास पहले से एक EC2 इंस्टेंस था मुंबई रीजन में. हमने एक EBS वॉल्यूम बना करके उस इंस्टेंस से अटैच किया. ये ध्यान में रखना है आपको, मुंबई में जो EBS वॉल्यूम आप बना रहे हो उसका अवेलेबिलिटी जोन और इंस्टेंस का अवेलेबिलिटी जोन सेम होना चाहिए. एक बार आपने ये EBS वॉल्यूम अपने EC2 इंस्टेंस को अटैच कर दिया, अगले स्टेप में आप क्या कर सकते हो, इस इंस्टेंस में लॉग इन करके आप अपने EBS वॉल्यूम को पार्टीशन फॉर्मेट कर सकते हो. क्योंकि जब आप वॉल्यूम बनाते हो वो रॉ वॉल्यूम होता है. रॉ वॉल्यूम पे कोई पार्टीशन, कोई स्पेस नहीं होती है, कोई पार्टीशन, कोई वॉल्यूम क्रिएटेड नहीं होता है. वहां पे रॉ कैपेसिटी होती है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप पार्टीशन फॉर्मेटिंग करोगे और उस वॉल्यूम में जा करके आफ्टर फॉर्मेटिंग आप वहां पे एक नई फाइल प्लेस करोगे. एक बार एक फाइल प्लेस कर लेते हो आप, वंस यू हैव प्लेस्ड अ फाइल, अगला काम आप क्या करोगे, अगला काम ये करोगे कि बाहर आके आप उसका स्नैपशॉट बनाओगे उस वॉल्यूम का. तो आपका EBS वॉल्यूम जहाँ पे देखते हो, आप क्रिएट करते हो, उसी जगह पे आपका वॉल्यूम दिखता है. आपको राइट क्लिक करके उसका स्नैपशॉट बना लेना. एक बार आप स्नैपशॉट बना लेते हो तो ये स्नैपशॉट से आप कभी भी वॉल्यूम इन द सेम रीजन भी बना सकते हो, या चाहो तो इस स्नैपशॉट को कॉपी कर सकते हो किसी और रीजन तक, और किसी और रीजन में जा करके आप इजिली वहां पे वॉल्यूम बना सकते हो किसी भी अवेलेबिलिटी जोन में, क्योंकि आपको एक इंस्टेंस से अटैच करना है उस वॉल्यूम को. तो आप जो भी अवेलेबिलिटी जोन ऑफ योर चॉइस होगा, उस अवेलेबिलिटी जोन में आप एक वॉल्यूम बना सकते हो.
एक बार आपका वॉल्यूम बन गया इन योर डेस्टिनेशन अवेलेबिलिटी जोन, एक बार एक वॉल्यूम बन गया तो उस डेस्टिनेशन अवेलेबिलिटी जोन के इंस्टेंस के साथ इस वॉल्यूम का अटैचमेंट कर सकते हो. And now finally, like you have a volume attached to EBS to EC2 instance, and it carries exactly the same data that was there in the previous region. ठीक है? So this way, like you can migrate your EBS volumes as well. So simply guys, इस practical में हमने snapshot ही नहीं देखा, हमने migration भी देखा. तो अगर आपने EBS वॉल्यूम बनाया, आपको एक रीजन से दूसरे रीजन में EBS वॉल्यूम का एक्सपोर्ट करना है, तो बहुत आसानी से आप इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हो. सो गाइस, ये प्रैक्टिकल बहुत सिंपल है, आप लोग एक ट्राई देना इसको. ये रिकॉर्डिंग हमारे चैनल पे आपको मिलेंगी, ठीक है? तो आप जब भी फ्री होंगे इस प्रैक्टिकल को एक ट्राई देना. एक और एक चीज याद रखना, वंस यू कंप्लीट योर प्रैक्टिकल एंड वंस यू क्लोज डाउन दीज कनेक्शंस, प्लीज रिमेंबर आपके इंस्टेंसेस आपको टर्मिनेट करने. तो here I'm in California. Here I should see my server 2. I will select it, right click it and terminate my server. तो ये server 2 को मैंने terminate किया यहाँ से. Okay. Similarly server 1 को मुंबई से terminate करना है. तो मुंबई में server 1 को मैंने terminate कर दिया. Okay. So both the servers got terminated. Okay. एक कैलिफोर्निया एक मुंबई, दोनों सर्वर टर्मिनेट हो गए. मीनवाइल हम क्या कर सकते हैं, स्नैपशॉट्स पे जा सकते हैं. स्नैपशॉट डिलीट नहीं होते, आपको मैन्युअली डिलीट करना पड़ता है. ओके. तो स्नैपशॉट को सिलेक्ट करके डिलीट स्नैपशॉट कर लीजिए. यू हैव टू कंफर्म ओवर योर डिलीट and then you can delete the snapshot. Similarly, here also you have to go into snapshots and choose your snapshot and right click and delete this and delete. Okay. And finally, मीनवाइल आपका इंस्टेंस टर्मिनेट हो गया होगा और आपका वॉल्यूम भी अवेलेबल स्टेट में दिखाता होगा क्योंकि इंस्टेंस टर्मिनेट हो गया. ओके. इन वॉल्यूम्स को भी आपको डिलीट करना है. So remember guys, if you are not in free tier, so these things can be expensive to you. Okay, इसके पैसे लग सकते हैं. If you forget it for a couple of days or months, it can be very expensive. So remember guys, if you are following me in this practical, okay, so you have to create 2 instances and at the end you are deleting 2 instances. You have 2 snapshots and 2 volumes as well. वो भी आपको delete करना है manually. So 6 resources in total have to be deleted. If you followed me in this practical the way I did it, then you have to delete 6 resources, 2 instances, 2 snapshots and 2 volumes. Guys, for this practical, I had created Windows Server instances prior to I came to this live lecture. So remember, only those servers, Windows servers, okay, you'll have to create it by yourself before you come to this class. So guys, I hope this content was very informative. In the next lecture, we'll be talking about something similar. So guys, if you have not subscribed to our channel, I'll request you to subscribe to this channel. You will be finding similar content on very regular punctual basis. So guys, if you have not subscribed, please subscribe. If your requirement is for a specific lecture, अगर आप कोई specific lecture request करना चाहते हो, तो please put it in the comment section. We have also done a few more lectures. If you are visiting this session for the first time, please see our group. Okay, please see our channel. In there, you'll have a playlist for AWS and other topics as well. As per your interest, you can go through them and find very useful content on this channel. So guys, I'm very thankful to you. You have watched this session until end. I hope you'll be watching our other lectures as well.